हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज सैटरडे है और यहाँ पे बेंगलोर में लॉकडाउन खुल चुकी है, गराज वगैरह खुल चुका है। तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट बिकॉज आई हैव अ बाइक R15 V3। मैंने उसको पिछले साल खरीदा था 2019 BS4 मॉडल। तो उसको साफ़ नहीं कर पाता था मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन अच्छे से, तो थोड़ा बहुत पोछा वगैरह मार देता था पर अच्छे से क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी। सो आई थिंक टुडे आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर प्रॉपर क्लीनिंग। उसके बाद लाके मैं चेन वगैरह वो सब क्लीन करूँगा, चेन क्लीनिंग एंड लूबिंग। दैट आई विल शो यू हाउ टू डू इट एट होम। You just need to buy these two products. These two, this one is cleaning, this one is chain cleaning, and this one is lubing. These two you need, and you need a main stand for your R15 V3 if you want to clean it yourself. तो आज दिखाऊंगा मैं आपको how to clean it. तो पहले चलते हैं, गाड़ी को साफ करके लाते हैं आराम से अच्छे से, फिर उसके बाद चेन का क्लीनिंग और लूबिंग करवाते हैं। चलो। So you can see the bike is properly cleaned and अब मैं इसका चेन क्लीन करूँगा, लूब करूँगा। So guys, as you can see, this is my chain lube and this is the chain clean. So इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर किसी को चाहिए तो for any bike you can get it and you can clean and lube your chain by yourself. यहाँ पे मैंने रखा है अपना मेन स्टैंड। ये जो है जो ग्रिल है इसको मैंने हटा दिया है अपने बाइक से भी, और यहाँ पे रखा है मैंने अपना मेन स्टैंड। इसको लेके चलते हैं और इसको फिट करवाते हैं पहले, फिर हमारा क्लीनिंग स्टार्ट होगा। Let's do it. First we have to put the stand that I have kept it here, and then we have to the cleaning and the lubing material. As you can see, I put it on the main stand. अब चलते हैं क्लीन करते हैं। पहले लेना है चेन क्लीन, इसको स्प्रे करना है। फर्स्ट गियर में डालना है गाड़ी को, धीरे धीरे पहिया घूमेगा तो इसको चेन में स्प्रे करना है।
क्लीन हो गया। मोस्टली क्लीन हो गया। तो क्लीनिंग अभी ख़त्म है, तो अभी चलते हैं लूब स्प्रे करते हैं इसको। पहले फिर से इसको डालना पड़ेगा फर्स्ट गियर में और धीरे धीरे स्प्रे करेंगे हम लूब। सो दिस इज़ द चेन लूब, वी हैव टू पुट इट ऑन फर्स्ट गियर अगेन एंड इसको धीरे धीरे स्प्रे करेंगे इसके चेन के ऊपर। So guys, we are done here. As you could see, it's pretty easy to do it at home. So why spend 150 rupees or 200 rupees on this? You just have to buy a lube and a cleaner, that's it. And इसका मैं एक राइड वीडियो बनाऊंगा, पर अभी थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं राइड पे नहीं जा सकता अभी, बट आई विल डू इट वेरी सुन। तो ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल।